Hello and welcome to this new tutorial. In today's tutorial, we shall talk about the concept of communism. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे और जानेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। वेल, कम्युनिज्म इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस is the communal organization of social existence on the basis of collective ownership of property. So when we talk about communism in a very simple sense, then it is a communal organization of basically social existence, and the basis of this collective social existence or collective communal organization is entirely on collective ownership of property. That means everybody in that communal organization will have the holdings as a collective ownership of the property in their community. In simple words, there cannot be a single ownership of any property, but it will be collective ownership of property. जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आम भाषा में या फिर आम उसका जो सिंपल मीनिंग है ये यही कहता है कि इन सिंपल सेंस दैट कम्युनिज्म एक बेसिकली एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस, और इसका जो बेस रहेगा सोशल एग्जिस्टेंस का ये कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है क्योंकि सारे जो इसके जो इंसान हैं, सारे जो इसके जो मेंबरान हैं, ये कलेक्टिवली ओन करेंगे ऑल द प्रॉपर्टीज़। मतलब यहाँ पर कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को अपना हिस्सा नहीं बना सकता है, बल्कि जो भी कुछ प्रॉपर्टी है उस कम्युनिटी में या फिर उस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस सोसाइटी में, तो वो जो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है ये सभी की रहेगी, ना कोई एक इंसान की। सो देयरफॉर कम्युनिज्म इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस इज द कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्वियसली सोशल एग्जिस्टेंस on the basis of collective ownership of property. Moving forward, as a theoretical idea, it is most commonly associated with the writings of Marx, for whom communism meant a classless society in which wealth was owned in common, production was geared to human needs, and the state had withered away, allowing for spontaneous harmony and self-realization. So we also have to understand here that on theoretical perspective or a theoretical idea, communism is mostly and commonly associated with the writings of Marx. And everybody knows how Karl Marx talks about Marxism. And Marxism is in a way propagating the idea of communism. So therefore you will find more literature and readings about communism more in Karl Marx writing. And what does Karl Marx says? So he basically meant communism means classless society. He doesn't want to have a society where we have all the classes, right? Example, we have elite class, we have middle class, we have poor class. So he doesn't want that. He wants classless society where everybody will own everything. Same point, the collective ownership of property. So everything of communism is around the property. Therefore he says that wealth should not be owned by any individual, but wealth should be owned in common. That means everybody should have the share in the wealth. Whatever the wealth of the society is or of the state is,
it should be owned collectively by everyone. That means everybody has a right on that wealth, and therefore it has to be owned by everyone, common. Further, he always says that production was geared to human needs. So, what does it mean here is that all the production which takes place in a society or in a state, it is for the human needs. And this is what we need to understand, that everyone who are into the means of production should be given the due credit. Example, developmental programs. All these development programs must be for the basic needs of the human, because end of the day it is workers who are getting into the production. They are the one who are producing in large number, but the credit end of the day goes to the elite class. And therefore he believed that all the means of production and means of distribution is all about for the basic human needs, and therefore everybody in common must be respected. And also he says that the state had shrunk, withered away, allowing for a spontaneous harmony and self-realization. So these are some of the most important ideas, theoretical ideas associated with writings of Karl Marx. आगे हमें ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि थियोरेटिकल जो आइडिया है कम्युनिज्म की, वो ज़्यादातर एसोसिएट करती है कार्ल मार्क्स के राइटिंग्स में। और कार्ल मार्क्स ही ऐसे जो इंसान है जिन्होंने मार्क्सिज्म को कंट्रीब्यूट किया, और आगे जाके वो उनके नाम से ही बहुत फेमस हुआ है। और इनकी जो राइटिंग रही है ये बेसिकली हमें ये दर्शाता है कि उनके हिसाब से हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई क्लास नहीं है बल्कि सब लोग एक एक है। कोई भी अपर क्लास, मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास का नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे लोग एक साथ मिलकर एक यूनिट बनकर रहने चाहिए, सो दैट दे डिस्ट्रीब्यूट ऑल द वेल्थ अमंग देमसेल्फ। और इसीलिए वो आगे कहते हैं कि जो वेल्थ है स्टेट की शुड बी ओन्ड बाय एवरीवन, मतलब जो सरकारी या स्टेट की जो वेल्थ है, रिसोर्सेस है, इसके ऊपर सभी का एक साथ बराबर का हक होना ज़रूरी है। इनका कहना यही है कि जो वेल्थ है स्टेट की ये सभी को बिलोंग करती है, इसके जो हिस्सेदार हैं ये सभी लोग हैं। कोई भी एक इंसान उस वेल्थ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑब्वियसली यू विल सी पीपल हु हैव एवरीथिंग एट वन साइड, और दूसरे साइड में ऐसे लोग रहेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स का कहना यही है कि जो वेल्थ है इट शुड बी ओन्ड बाय कॉमन, मतलब सभी लोगों की ये वेल्थ है और ना कि कोई एक इंसान की। आगे ये भी कहते हैं कि प्रोडक्शन वॉज गियर टू ह्यूमन नीड्स, मतलब जो प्रोडक्शन बन रहा है ये इंसानों के लिए है, और इस प्रोडक्शन में जो लोग इन्वॉल्व है उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कोई मैनेजमेंट में बैठा हुआ है। और जब तक हम वो लोग जो इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे। और अंत में यही कहते हैं कि जो प्रोडक्शन है ये लोगों की भलाई के लिए है, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि जो स्टेट है वो अभी मुरझा गया है, और मुरझाने के बाद स्टेट हैज़ अलाउड फॉर स्पॉन्टेनियस हार्मनी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये है थियोरेटिकल आइडियाज़ बिहाइंड कम्युनिज्म which is associated with the writings of Karl Marx, and today it is being called as a Marxist theory. Moving forward, the term is also used to describe society founded on Marxist principle. So therefore we also have to remember
that the term today communism, or today the term is known as a Marxist or Marxism, is used to describe societies founded on Karl Marx principles. And these Karl Marx principles crucially has been adopted by Leninism and Stalinism. आगे हमें ये भी समझना है कि ये जो टर्म है कम्युनिज्म या फिर मार्क्सिज्म, ये टर्म को बहुत यूज़ किया है या फिर डिस्क्राइब किया है उन सोसाइटीज़ के लिए जो सोसाइटीज़ मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जैसे लेनिनिज्म या फिर स्टैलिनिज्म। और इसीलिए हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कम्युनिज्म है इन शॉर्ट या फिर एक आम भाषा में इज अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोशल एग्जिस्टेंस on the basis of collective ownership of property. Moving forward, following are the key features of orthodox communism, and with these features we will be able to understand exactly what is communism or what is Marxism in short. Okay, let us begin with the first point. Marxism and Leninism is the official ideology. Now we have to remember that in any sort of a state wherever the Marxist principles are being adopted or are being used to describe societies, then obviously you are going to find the first and foremost official ideology, and that official ideology would be always Marxism or Leninism. It has to be an official ideology if you want to understand what exactly the orthodox communism is all about. अगर हमें ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म के बारे में जानना है तो हमें ये बात बहुत समझनी चाहिए कि उस स्टेट में मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म एक ऑफिशियल आइडियोलॉजी रहेगी, और जिस किसी भी स्टेट में मार्क्सिज्म या फिर लेनिनिज्म एज अ ऑफिशियल आइडियोलॉजी उसको स्थापित किया है तो वो स्टेट वो सिस्टम एक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म कह सकते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ कम्युनिस्ट पार्टी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म एंड एंजॉयज अ मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर्स. Very simple, that in any state, whichever state specifically practice orthodox communism, then you'll find a communist party over there, a party which is organized on the principle of democratic centralism, and that party which enjoys political power. Single party in short, no other party. And we have couple of countries where we have single party system, where communism principle is been adopted very strongly, and that political party enjoys the monopoly. An example is China. To some extent, example is North Korea, but North Korea is not about democratic centralism, but it is a communist party. And Russia for that matter, Cuba for that matter. So these are some of the countries where you'll find that communist party is organized either sometime on principle of democratic centralism, or in short just an authoritarian centralism or totalitarian centralism, but they enjoys monopoly of political power. दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है ये कहता है कि ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म को अगर समझना है तो आपको ये बात समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी वो पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप रहेगा ये पूरा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के हिसाब से रहेगा. और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म मतलब एंजॉय मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर, सिर्फ एक पार्टी रहेगी. और अगर हम हमारे आसपास देखेंगे तो दो तीन एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आते हैं, और ये एग्जाम्पल है जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया या फिर क्यूबा, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उसका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि क्यूबा में मान लो या फिर रशिया में, ऑब्वियसली नॉट इन चाइना एंड
नॉर्थ कोरिया। लेकिन इन चारों देशों में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये एक मोनोपोली पार्टी है। दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी सिस्टम एंड एंजॉयज द एंटायर पॉलिटिकल पावर। वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और उसकी मोनोपोली है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर तैयार नहीं हो सकती है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, कम्युनिस्ट पार्टी रूल in the sense that it dominate the state machineries, creating a fused state party apparatus. Now we need to understand here that whenever we talk about orthodox communism, then we must understand that it is the communist party rule, and they rule in the sense that it dominate the state machinery. It has to dominate the state machinery. Without that they cannot have the monopoly of their political power. एक बात यहाँ पर समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म है वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो रूल है ये वही सिंपल रूल है कि उनको पूरी जो स्टेट apparatus जो है, सिस्टम है, स्टेट पार्टी सिस्टम है, या फिर स्टेट मैकेनिज्म रहेगा, या फिर स्टेट का जो मशीनरी रहेगा, सारे इंस्टीट्यूशन उस सबको डोमिनेट करना है, क्योंकि डोमिनेशन के बाद ही उसको वो मोनोपोली मिलती है या फिर वो पॉलिटिकल पावर मिलता है। सो इसीलिए आपको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक कम्युनिस्ट कंट्री में और जहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वहाँ पर आपको ये देखने को बहुत मिलेगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो रूल है, उसका जो डोमिनेशन है वो आपको सभी स्टेट मशीनरीज में मिलेगा, पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें मिलेगा, मतलब हर एक चीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। थ्रू दिस दे एंजॉय देयरफॉर दैट पॉलिटिकल पावर और so called monopoly of political power. Moving on to the point number 4, Communist Party plays a leading and a guiding role in society, controlling all institutions including the economic, educational, cultural and recreational institutions. Here we need to understand that Communist parties always plays an important and a leading role. Communist parties plays a leading and a guiding role in society, especially controlling all its institutions, including the economics, educational, cultural, and recreational institution. This is how the setup of Communist Party plays. They have to lead and they have to guide the society. They have to always control the institutions, because controlling institutions gives them power. यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में, और इसके अलावा जो सारे जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल, कल्चरल या फिर रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी को कंट्रोल करती है। उन्हें कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके उनको वो पावर मिलता है, अदरवाइज उनको वो पावर नहीं मिलेगी। And the last very important feature of orthodox communism is that economic life is based on state collectivization, and it is organized through a central planning system. That means all the economic activities or the economic life of the state is centralized, is collectivized, and is organized through a central planning system. That means state will control the economic activities, and the decision taken by the state has to be implemented in the market. So this is all about the important features of orthodox communism, and in short the concept of communism. And I hope you have understood the concept of communism. Thank you very much for watching this, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.